अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना होता है। इट्स ऑलरेडी वन। सो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें कांस्टेंट को साइड पे ले जाना है, और हम 11 को जब इस साइड पे लाएंगे इसका रेसिप्रोकल होगा -11। और उसके बाद जो है हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। इसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को देखना है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 10, so its half will be 5. Hence 5 square must be added to both sides of the equation. Now in this equation we will be adding plus 5 square, and to the other side also plus 5 square. So this it's actually a square minus 2ab plus b square. So a minus b whole square, it's been expanded to form this. So 25 minus 11, so we got to have 14 over here. Now taking square root on both sides of this equation on the constant plus minus value, this will cancel off. So we got x minus 5 equal to plus minus 14 square root minus 5 on the other side. It will become x equal to plus 5 in plus minus 14 square root. So x got two values. One is plus 14 square root with 5, another is minus 14 square root, and that is the answer to this question. Don't forget to subscribe my channel and like the videos and share with your friends for further informative videos.